So miasmatic reflection in diseases. Miasmatic reflection in diseases. So psoric skin conditions like जैसे कि physical reflections क्या होते हैं miasmatically, तो ये हमने पहले भी देखा है और आज भी हम वो in the form of symptoms, in the form of disease हम देखेंगे कि psoric skin symptoms तरह से होते हैं, psoric miasmatic reflection on the skin किस तरह से होता है, acute eczema, boils, acne, rash, ityadi. These are the psoric reflections on the skin. Then psychotic condition जैसे warts, chronic eczema, blackish discoloration of skin, staining, lichenification, viral infections like warts, fungal infections, accumulative disorders like lipoma, fibroma, xanthoma, etc. And syphilitic skin conditions or reflections, deep cracks, fissures with bleeding, carbuncles, varicose ulcers, malignant carcinomas. So all destructive conditions, all destructive things appear on the skin is syphilitic. Then rheumatoid arthritis. So what is psoric rheumatoid arthritis? When there is joint pains, joint inflammatory process or joint inflammation only, redness, pallor, dolor is psoric. Then psychotic, when there is a swelling, proliferation of synovial membrane and osteophytic formation. Then syphilitic, destruction of cartilage and bone start due to continuous friction and age. Then rheumatoid arthritis. Syphilitic, as it is an autoimmune disease, self-destruction and distortion takes place. Then osteoarthritis. Psychotic osteoarthritis, when chondrocytes proliferate, accumulation, nodular cystic like swelling. Then syphilitic, when progressive erosion of articular cartilage takes place. So जहाँ कहीं degeneration, destruction होगा, yes. Then gout is pure psychotic, as there is deposition or monosodium biurate monohydrate crystals form. Ankylosing spondylosis is pure syphilitic due to presence of autoantibodies. Due to presence of autoantibodies, self antigen antibodies खुद के ही एंटीजन को एंटीबॉडीज बना के किल करते हैं. सो दिस इज एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस. देन सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, SLE, is pure syphilitic. It is autoimmune disorder. Self-destruction and distortion takes place in this disease. Then anemia, psoric, psychotic, and syphilitic. Psoric anemia is because of nutritional problem, nutritional insufficiency. Psychotic anemia when hemoglobin goes down due to causes like hypoplasia, which causes bone marrow depression. Syphilitic anemia when destruction is associated like in Addisonian crisis, pernicious anemia. Yes. Then thrombocytopenia, leukopenia, and neutropenia is syphilitic. There is destruction. Thalassemia is pure syphilitic, as there is inherited impairment of hemoglobin production. Then thrombocytopenia again is syphilitic. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में प्लेटलेट काउंट बहुत ही लो हो जाता है और टू फेल्योर टू मेगालोकैरोसाइट मैच्यूरेशन. यस, सो reduce platelet is thrombocytopenia. Then leukemia, psychotic. There is increased number of primitive white cells in bone marrow.
voice is low. सभी को वॉइस कम आ रहा है? अभी आ रहा है सर। ओके अभी आवाज सब प्रॉपर। ओके अभी ठीक है सर, अभी ठीक है सर। ओके सर ओके. So leukemia, there is increased number of primitive white cells in bone marrow and when destruction takes place. Syphilitic, as it is congenital bleeding disorder due to a reduction of factor 8, is again syphilitic. Polycythemia, psoric and psychotic. So psoric polycythemia, when it is physiological, that is in persons lying in high altitude, that is Psora, because of only temporary physiological, and psychotic when red cell count increases due to tumorous condition of the organs. Leukocytosis, psoric when it is physiological, psychotic in all other conditions as the WBC count increases. Neutrophilia. Neutrophilia, that is neutrophils increasing during acute inflammation, is always Psora. Lymphocytosis is psychotic as lymphocytes increase during chronic inflammation. So acute में neutrophils, chronic में lymphocytes, so lymphocyte psychosis, neutrophils is Psora. Down syndrome, that is 21X trisomy, psychosyphilitic. So these are the reflection of diseases according to Miasm. Now, neurological disorders. So neurological disorder, acute confusional state due to drugs are acute confusional state due to drugs. तो मल्टी ड्रग्स थेरेपी जब शुरू रहती है, एलोपैथी ले रहे हैं, होम्योपैथी ले रहे हैं, आयुर्वेदिक ले रहे हैं, कुछ अल्टरनेटिव्स पैथी जैसे यूनानी या फिर नेचुरोपैथी, उसके साथ साथ एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, योगा, मेडिटेशन, इससे क्या हो जाता है, बॉडी का बायोकेमिस्ट्री टोटली डिस्टर्ब हो जाता है एंड देयर इज formation of complex disease. Yes, so this is a confusional state due to drugs is Psora, क्योंकि ये टेम्पररी होता है, जैसे ड्रग बंद हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. यस, सो एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंसेस आर साइकोटिक एंड सिफिलिटिक. एंडोक्राइनल डिस्टर्बेंसेस, इट इज साइकोटिक और सिफिलिटिक, जहां कंप्लीट डिस्टर्बेंस हो जाता है या फिर एक आधा हार्मोन एंडोक्राइन कंप्लीटली सिक्रेशन स्टॉप हो जाता है, प्रोडक्शन को स्टॉप हो जाता है, या फिर एक्सेस हो जाता है, हाईली एक्सेस, आउट ऑफ कंट्रोल, इज सिफिलिटिक. न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स आर psoric ड्यू टू organ system failure, are syphilitic like hepatic failure. Uremia are syphilitic due to infection like bacterial meningitis, are pseudosyphilitic. So these are condition mostly syphilitic. Due to tubercular meningitis is pseudo-psychotic syphilitic disease. Yes. Due to vascular disorder like hypertension, encephalopathy or psychosis. Due to subarachnoid hemorrhage is psychosyphilitic. Yes. So these are mostly the psychotic and syphilitic conditions. Then epilepsy again ट्राइमाइजमेटिक, सोरिक भी होती है, साइकोटिक भी होती है, सिफिलिटिक. जैसे कि छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में सीजर्स आते हैं, फेब्राइल कन्वर्जेंस होते हैं, दैट इज सोरिक, टेम्पररी. साइकोटिक एपिलेप्सी ड्यू टू SOL, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स, एंड सिफिलिटिक जो स्टेटस हो जाती है एपिलेप्सी, दैट इज सिफिलिटिक. सो एपिलेप्सी
C. Due to febrile convulsions is soric. Epilepsy after trauma is sorosyphilitic. After stroke is syphilitic with tumor was psychotic due to meningitis is soric and status epilepticus is psychosyphilitic. Dementia and amnesia. Dementia and amnesic syndromes due to idiopathic degeneration are syphilitic. Idiopathic degeneration are syphilitic जिसका कोई origin नहीं. Due to vascular disorder are syphilitic. Due to neoplastic disorder, benign tumors are psychotic. Malignant tumors are psychosyphilitic. Due to infections are soric. Due to metabolic disorders are psychosis and syphilis. Then disorder of vision. विजन के लिए आई के लिए क्या डिसऑर्डर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू माइजम मोनोन्यूक्लियर डिसऑर्डर्स लाइक कैटरैक्ट आर सिफिलिटिक ग्लॉकोमा आर साइकोटिक vitreous hemorrhage are syphilitic retinal detachment is syphilitic and disorder of ocular motility like weakness of movement is psychosis and loss of movement is syphilitic वीकनेस ऑफ मूवमेंट में क्या सिम्टम्स रहेगा कि आंखें एकदम हेवी हो गई लीड्स एकदम आईलिड्स हेवी हो गए बहुत स्ट्रेन से उठाने पड़ रहे हैं बंद करने पड़ रहे हैं ना ओपन क्लोज बहुत स्ट्रेन लग रहा है बहुत हेवीनेस फील हो रहा है ना बहुत वीकनेस फील हो रहा है टायर्डनेस फील हो दिस इज साइकोसिस बट वही जहां लॉस ऑफ मूवमेंट हो जाता है मीन्स कंप्लीट पैरालिटिक स्टेज हो जाती है या फिर इनवॉलेंटरली ओपन एंड क्लोज हो जाता है दिस इज सिफिलिटिक so thus all diseases due to inflammation infection or nutritional disorder are sorry all diseases due to space occupying lesions or atherosclerosis or under expression of neurotransmitters are psychotic all diseases due to destructive disorders are syphilitic miasm and psychiatric disorders like psoric ailments are disorders which are due to deficiency and have purely physiologic neurotic disorder such as anxiety neurosis restlessness simple depression melancholia hypochondriasis that have no pathological or structural changes involved are psoric elements. Psychotic elements are those which are produced due to space occupying lesions or due to metabolic disorder like uremia, bilirubin imbalance, hepatic encephalopathy, hypochondriasis, phobias, and imbecility. So these are psychotic. Here, the silent features are some kind of stasis, slowness, pseudoism, corruptions. These are psychotic. Syphilitic elements like these are disorder due to some kind of distortion and destruction perversions like for the example like manias, obsessive compulsive disorder, schizophrenia, psychosis, hysteria, paranoias, mental retardation, Down syndrome, idiocy, perverted sexuality. These are all syphilitic elements. So there is total loss of control over thoughts and motion, मतलब voluntary का involuntary बन जाना in these elements making them belong to syphilitic miasm. So the key phrase is out of control for syphilis is the syphilitic expression of diseases. So this is complete the miasmatic reflection in diseases. Yes. किसी को कुछ पूछना है बोलना है तो पूछ सकते बोल सकते
ओके, तो हम आगे का चैप्टर ले लेते हैं। चैप्टर 30, ब्रेन डोमिनेंस। Left brain dominance, right brain dominance. So brain has two side, left and right. Right brain controls the left side of body and left brain controls the right side of the body. So left brain dominance or left brain dominant people are known to have following characteristics. जिनका लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है मतलब वो पीपल होंगे राइट साइडेड. सो राइट साइडेड पीपल्स आर लॉजिकल, एनालिटिकल, वर्क ओरिएंटेड, result oriented. That's why these peoples are businessmen. They are on high post. पॉजिटिव है मतलब डिक्टेटोरियल, मैथमेटिकल, कैलकुलेटिव, मनी माइंडेड, बिजनेस माइंडेड, calculative, language interested, and achievers. These peoples are achiever, that's why they are industrious. Yes, so this is left brain dominance, means right sided persons. तो right sided persons की इतनी qualities होती है. Yes, they are logical, analytical, work oriented, result oriented, positive, courageous, mathematical, calculative, money minded, business minded, language interested peoples and achievers. And the left brain dominant people can be good, like, तो कौन से पीपल्स, कौन से बिजनेसमैन इस कैटेगरी में आते हैं? दैट इज द राइट साइडेड बिजनेसमैन, एमबीए मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव्स, सुपरवाइजर्स, ट्रेडर्स, इंजीनियर्स, सिविल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस, leaders, radiologists, physiotherapists, tourists and travelers. These are all left brain dominant people and they are right sided. The right brain dominant people are known. Right brain है मतलब left sided persons. So left sided persons are emotional, very sensitive, imaginative, sentimental, creative, artistic, poetic, spiritualistic, and hysterical. So this is the right brain dominance, that means left sided peoples. So these are the qualities of brain dominance. They are artistic, painters, poets, musicians, dancers, planners, architects, scientists, computer graphics, commercial artists, doctors and lawyers. Doctors and lawyers have to be both brain dominance. लेफ्ट साइडेड भी हो सकते हैं, राइट लेफ्ट साइडेड. सो बिकॉज ऑफ प्रिडोमिनेंस ऑफ लॉजिक एंड इमेजिनेशन, सो मोस्टली आप बोल सकते हैं अभी कि मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स एंड होम्योपैथिक डॉक्टर्स के ब्रेन डोमिनेंस किस टाइप से होंगे. सो मोस्टली जो लॉजिकल इमेजिनेटिव होते हैं दैट इज द होम्योपैथ्स. सो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस, right brain dominance. So very interestingly, it has been observed that people who have particular type of nature have an affinity to have affections on same side. For example, a strong and positive logically oriented people or constitutions tend to suffer from right-sided. Yes, affections showing immune impairment more on the right side. तो जो लेफ्ट साइडेड लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट होंगे, जिनकी क्वालिटी होंगी लॉजिकल, पॉजिटिव, सो दीज पीपल हैव राइट साइडेड एफेक्शंस. और जो राइट ब्रेन डोमिनेंस होंगे वो लेफ्ट साइडेड मोस्टली सफर होंगे. सो लेफ्ट
The meek and the sensitive and the creative tends to suffer from left-sided affection. So it has been seen in our repertories and materials that right-sided remedies have more metals and positive remedies. Yes. So right-sided remedies are very strong remedies like metals. The sensitive and the hysterical remedies are even more on the left-sided affections. जितने भी सेंटिमेंटल सेंसिटिव हिस्टेरिकल रेमेडीज है लाइक नेट्रोम्यूर सेपिया एसिड फॉस इग्नेशिया these are left sided. So right sided remedies includes metals alumina argenticum aurum magnum mercury molybdenum palladium platina stannum. These are right sided. And most positive remedies like arsenic camphor, these are polycrest, arsenic camphor, causticum hepar mercury naxomica sepia, these are most positive remedies. Most money minded remedies like arsenic bryonia calcarea lycopal stilla sulfur, these are all right sided. So most left sided remedies like left-sided remedies are sensitive and hysterical. So argenticum nitricum, asafoetida, asarum, capsicum, senna, clematis, crocus, graphitis, creosote, lachesis, meserium, phosphorus, sepia, sulfur are left-sided. That's why these peoples are sentimental, sensitive, hysterical. So hysterical remedies like ignitia, variana, viola, semisifuga, crocus, cyclamen are left-sided. The mental characteristics of Psora, which stand for sensitivity, matches the right brain dominance. Yes. So mental characteristics of Psora, which stand for sensitivity, matches the right brain dominance like hysterical sensitivity. तो जो पेशेंट लेफ्ट साइडेड है सेंसिटिव है तो वो राइट साइडेड हो सकता है व्हेन इन द हिस्टेरिकल कंडीशन. जैसे कि लैकेसिस इट इज प्योर लेफ्ट साइडेड रेमेडी बट लैकेसिस भी राइट साइडेड हो सकता है इन साइकोटिक मायाजा. लाइकोपोडियम लेफ्ट साइडेड हो सकता है इन साइकोटिक मायाजा इन हिस्टेरिकल कंडीशन. Yes. So imaginations, illusion, delusions, fanaticism, and out of control symptoms, which are more of syphilitic and could be right brain dominant and hence left sided. The logic, the planning, the manipulative brain of psychosis may give more right sided affection. But as the creativity increases in the psychosis, the left side becomes more prone. Yes. Similarly, when the syphilitic attitude, the psoric trait is more on the working or industrious side, the constitution is more right sided. In short, constitutions which are full of work and thrust can be more right sided. जो बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं वर्क ओरिएंटेड होते हैं बहुत इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट मनी माइंडेड होते हैं दीज आर पीपल्स ऑफ राइट साइडेड दैट मीन्स लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस पीपल. So in short, constitutions which are more sensitive and spiritual can be more on left sided. So the example of lycopodium, warning, these are only some hints which help as pointers to the group of remedies and to understand the relationship between miasm and remedy. One should not take these hint as hard and fast rule. सर ने यहाँ क्लियर कर दिया है कि ये इसी तरह से होगा ऐसा माइंड में मत फिट कीजिए. अकॉर्डिंग टू माहिज्म ये चेंज होता है. जैसे लैकेसिस लेफ्ट साइडेड है बट लैकेसिस मे बी राइट साइडेड इन साइकोटिक कंडीशन.
Merck solve pure right-sided है, but Merck solve may be left-sided in soric condition. Calcarea pure right-sided है, but it may be left-sided in Psora. तो इस तरह से ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, जो हिंट सर ने दिए है कि खाली हमें ये देखना है, ये इससे हमें आइडिया लेना है कि ये इस तरह से होता है, लेकिन ये ऐसा ही मिलेगा, ऐसा ही होगा, परफेक्टली ऐसा नहीं है। हमें ओनली इससे अंडरस्टैंड करना है कि अकॉर्डिंग टू माइज्म, अकॉर्डिंग टू डिजीज प्रोसेस ये चेंज होता है। यस, सो दिस इज कंप्लीट द chapter number 30. So today we have completed 2 chapters. So tomorrow we will start the chapter number 31, genetics of psychosis. Genetic of psychosis. So अभी किसी को कोई डिस्कशन करना है तो हम कर सकते हैं। यस, हैंड राइज कीजिए। यस, फास्ट। आज का मौन व्रत है। यस, बबलू राउत जी बोलिए। हाँ सर, नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आ, मैं थोड़ा सा लेट भी ज्वाइन हुआ, बीच में आवाज भी नहीं आ रहा था थोड़ा सा। ओके ओके। आ, आधा 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 ठीक से किया, आधा नहीं किया मैंने। आज हमने तो मैडम जो रिफ्लेक्शंस जो देखे। हाँ हाँ, जो स्टार्टिंग का जो है थोड़ा सा मिस हो गया मेरा, यानी ठीक से आवाज नहीं आ रहा सर। आपका नहीं क्या? हम्म। तो मैंने मैंने डाला था उसमें। तो इसमें लास्ट लास्ट का जो भी किया वो समझ में आया। जो जो लास्ट चैप्टर था अभी, जो आपने ब्रेन डोमिनेंस वगैरह ये किया है, वो तो समझ में आया। वो लॉजिक जो है वर्क ओरिएंटेड वगैरह जो आपने बताया वो तो, तो इसमें उतना ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है सर, मुझे इतना मैक्सिमम समझ में ही आया सर ये वाला। ओके, तो पहले वाला थोड़ा सा मिस हो गया सर, इसमें थोड़ा सा बता तो सकते तो आप थोड़ा भी सा। वो चैप्टर पढ़ लेना। हाँ हाँ। इजी है, कोई उसमें नहीं, ओनली माइजमेटिक रिफ्लेक्शंस दी है। फिजियोलॉजी मतलब बॉडी के ऊपर, मतलब फिजिकल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, डिजीज क्या हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू माइजम किस तरह से बॉडी पे उसका रिफ्लेक्शंस आएगा, यही दिया है। मेंटल्स का उसमें कुछ नहीं है। यस ओके, थैंक यू सर। यस यस। और कोई? आज का चैप्टर अच्छा से समझा है सर, इसलिए कुछ पूछने की इच्छा है। अच्छा, सर ना तो लेफ्ट में है ना तो राइट में है, तब क्या करेंगे? बीच में है तो? यस, ना लेफ्ट में है ना राइट में है, तो इसके लिए एक बहुत ही वंडरफुल आइडिया सर ने दी है। जहां कंफ्यूजन है, फिक्स नहीं है ना, ऐसे परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं मिल रहा है, वहां हमें छोड़ देना है। या फिर ऐसे केसेस में थोड़ा सा और डिटेल में जाके हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि पेशेंट हिस्टेरिकल है क्या, तो हम हिस्टेरिया और हिस्टेरिकल रूब्रिक वहां ले सकते हैं। चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स जो रहता है वो कैसा? चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स में क्या होता है, मॉर्निंग में अगर आपको लूज मोशन हो रहा है, यूरिन में कॉन्स्टिपेशन है,
मॉर्निंग में एकदम थर्स्टी थे, इवनिंग में थर्स्टलेस हो गए, मॉर्निंग में आपको बहुत ही स्लीपीनेस फील हो रहा था और नाउ बिकम स्लीपलेस। सो दिस इज चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम, कभी ये कभी, है ना। मॉर्निंग में आपको मतलब पहले आपको राइट साइडेड पेन था, अभी लेफ्ट साइड हो रहा है ना। बाद में और नेक्स्ट अदर डे, नेक्स्ट डे इट इज चेंज द पोजीशन, मतलब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। नहीं सर, वो नहीं, जैसे डायगोनल पेन रहता है, एक लेफ्ट साइड में पेन एक पैर में है और राइट साइड यानी अपोजिट। हाथ में अगर लेफ्ट साइड में पेन है तो राइट साइड के लेग में पेन है, तो ये क्रॉस डोमिनेंस वाइज, में कैसा क्रॉस वाइज, रहेगा? हाँ, क्रॉस वाइज, क्रॉस वाइज, हाँ। साइड क्रॉस वाइज आप ले सकते हैं रूब्रिक, लेकिन वो उतना परफेक्ट मिलना चाहिए। अच्छा। एक आधा सिम्टम वैसा है या फिर हर बार वैसा है, अगर ऑलवेज होगा, थ्रू एंड थ्रू होगा, तो आपको वो सिम्टम, वो रूब्रिक लेना पड़ेगा। नहीं, एक पेशेंट आया था सर, घर पे झगड़ा हुआ था, तो वो एकदम पैरालाइज, यानी सेंसेशन कम हो गया था उसके लेफ्ट पैर में और राइट हैंड में। ऐसा पेशेंट था, तो क्रॉस वाइज लेना चाहिए ना? क्रॉस वाइज ले सकते हैं। क्रॉस वाइज, ओके। ये डोमिनेंस के बारे में क्या है इसका, यानी ये जो बताया, ये डोमिनेंस में कौन सा आएगा, राइट लेफ्ट? तो डोमिनेंस में जो हमने अभी पढ़ा है कि लेफ्ट लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस है, तो वहाँ उस पेशेंट की राइट साइड मोस्टली अफेक्ट होगी, और राइट ब्रेन डोमिनेंस है तो उस पेशेंट की लेफ्ट साइड मोस्टली अफेक्ट होगी। जो भी होगा लेफ्ट साइड पे होगा। और फिर उसके मेंटल सिम्टम्स सर ने दिए हैं कि लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट पीपल के क्या मोस्टली जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, उनका विल कैसे होता है, उनके मॉरल्स किस टाइप के होते हैं, ये सब दिए हैं। दैट इज द सर, जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ ये लेफ्ट जो, ब्रेन डोमिनेंस। हाँ सर, ठीक है ना सर, ठीक है, थैंक यू। आप फिर इसे आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में आपको याद हो जाएगा, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बेस पे हम साइट डिटर्मिनेशन करते हैं, क्योंकि हमारे रेपर्टरी में साइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। साइट के लिए लेफ्ट साइडेड रेमेडीज अलग है, राइट साइडेड रेमेडीज अलग है। तो ये जो साइट डिटर्मिनेशन है, ये इसके लिए सर ने ब्रेन डोमिनेंस पढ़ाया है कि किस टाइप से होम्योपैथिक मेडिसिन साइट के ऊपर वर्क करती है, उसका रीजन क्या है, तो ब्रेन डोमिनेंस। होल बॉडी में सर होता है कि हेड हेड में अलग होता है सर? हेड से लेके तो फीट तक, लेफ्ट साइड राइट साइड, क्योंकि सेंट्रल एक्सिस बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, टू साइड्स में डिवाइड कर देती है, और ये अर्ली डेज ऑफ कंसेप्शन होता है। कंसेप्शन जैसी होगा तो सेल डिवाइड होना शुरू हो जाता है, सेंट्रल एक्सिस बॉडी को उस जो भी जाइगोट फॉर्म होता है उसको डिवाइड कर देता है। उसके सर बाद फिर एक बार प्राइमेटिव स्टिक से फिर आगे के ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाता है। सर कई एक बार मैं पढ़ा था उसमें कि नेक के नीचे शायद लेते हैं इसको, नेक से वो डिवाइड होता है कैसे, लेफ्ट वाला राइट चला जाता है और राइट वाला लेफ्ट चला जाता है। वो क्रिस क्रॉस। यस सर। यस। उसके पहले अगर लेना है तो हमें साइड नहीं लेनी पड़ती, उसके क्रिस क्रॉस के बाद ही हमें साइड डिटर्मिनेशन होता है। और मीनोपॉज के बाद, जैसे ही मीनोपॉज लेडीज का होता है, उसके बाद हमें साइड नहीं लेना है, साइड कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि हार्मोन चेंज हो जाते हैं। मोस्टली फीमेल्स में मेल हार्मोन्स डोमिनेटिंग बनते हैं, दैट्स वाई वहां पे साइड डिटर्मिनेशन नहीं होगा। सर जैसे कभी लेफ्ट में हो रहा है, कभी राइट में हो रहा है, कभी लेफ्ट राइट, इसको डेलिरियम चेंज ले सकते हैं इसको? अगर कंटिन्यूअस है, उस वजह से पेशेंट बहुत डिस्टर्ब है, उसी फेज में रह रहा है, तो हम डेलीरियम ले सकते हैं। जैसे सर एक लड़का है सर, 8 साल का, उसकी आंख में बिलनी हो जाती है, मोस्टली एक बार राइट। जैसे कि कल भी एक डेलीरियम के लिए किसी डॉक्टर ने सवाल किया था, तो डेलीरियम कंडीशन मोस्टली हम एक्यूट्स में लेते हैं, एक्यूट कंडीशंस में लेते हैं, है ना, क्योंकि
एक्यूट कंडीशंस में पेशेंट डिलीरियम में जाता है। डिल्यूजन मोस्टली हम क्रॉनिक में भी यूज कर सकते हैं। यस सर मूड चेंज होना सडन मूड चेंज होना, तो मूड रूब्रिक है उसमें। उसमें मतलब मूड वेरिएबल, चेंजेबल, देन डेलीरियम मूड चेंजेस, ऐसा भी एक रूब्रिक है शायद डेलीरियम में। और सर समझो एक बात पे घड़ी घड़ी चेंज होता है, डिसीजन चेंज होना बारम्बार, एक एक चीज पे कांस्टेंट नहीं रहना, ये उसके लिए ले सकते हैं? ले सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे रूब्रिक्स आएंगे, डिसकंटेंटेड, अनकॉन्स्टेंट, देन मतलब कंफ्यूजन, आइडियाज एबंडन्ड, बहुत सारे रूब्रिक्स है उसके लिए। लेकिन एग्जैक्ट क्या कंडीशन है उस हिसाब से हमें रूब्रिक सिलेक्ट करना पड़ेगा। सर एक दिन आप वो रूब्रिक बताए थे लिबर्टिनिज्म, तो उसको हम बीमारी में कैसे देखेंगे? लिबर्टिनिज्म कौन सा रूब्रिक? लिबर्टिनिज्म बता रहे थे ना सर परसों आप। लिबर्टिनिज्म कल ही बताया ना हमने। जी, तो उसको हम बीमारी को कैसे देखेंगे कि वो कहाँ लिबर्टिनिज्म किस किस बीमारी में हम ये देख सकते हैं? आपको आपके ऑब्जर्वेशन में से रूब्रिक निकालना है आपको। पेशेंट की हम अगर आपके सामने आप राखी सावंत और उस टाइप के जितने भी कैरेक्टर्स है उनको अगर आपके सामने खड़ा किया और आपको बोला कि आप इनकी हिस्ट्री लो, तो आप क्या लेंगे कि कैसा बिहेवियर है उनका, किस तरह से वो बिहेव करते हैं, किस तरह से मीडिया के सामने आते हैं, कभी कुछ भी बोल देते हैं, है ना, किसी चीज का उनको कोई अंदाजा नहीं होता है, भान नहीं होता है, कभी कुछ भी कर डालेंगे पट से। तो दिस इज लिबर्टिनिज्म। ये सर माइंड में और बीमारी में फिर कैसे हम उसको बीमारी में कैसे ये देखेंगे कि रूब्रिक कौन है सी ना, बीमारी? ये रूब्रिक है, ये जिसे हम यूज कर सकते हैं स्पेशली ऐसे पर्सनालिटीज को, ऐसे बिहेवियर को। तो बीमारी जो सर ऐसे होगा कि चेंज होती रहेगी बार बार इधर से उधर, तो ऐसे ही कुछ होगा तभी तो। एक्चुअली इसे हम बीमारी नहीं कहेंगे, ये कोई डिजीज नहीं है, ये एक सिम्टम है और ये एक टाइप ऑफ बिहेवियर है। अंडरस्टैंड? बट इट इज प्योर सिपिलिटिक। यस। और हाँ सर, जो नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं आप, जी, उसका टाइमिंग क्या रहेगा सर? वो एक्चुअली हम उसके पहले प्री मीटिंग लेंगे जितने भी मेंबर्स हुए, और सभी को जो सुटेबल टाइम रहेगा उस टाइम पे हम उसे स्टार्ट करेंगे। थोड़ा क्लिनिक भी रहती है ना, तो थोड़ा टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा ना कैसे? यस यस। तो देखेंगे ना, अगर काफी मेंबर्स हुए तो हम इसी टाइम पे उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। यस, 4 से 5 ही हम उसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, और कोई? Okay, so should I complete the class here? So thank you very much, and today we will take the next chapter, that is chapter number 31. So thank you very much. Bye bye. See you. थैंक यू सर। Take care. Okay. Thank you, sir. थैंक यू Thank सर। you. Thank you, sir. Thank you.